ये देखिए ना ऐश्वर्या राय ना करीना कपूर, आप लगी है बिपाशा बासु। Hi, welcome back to the channel. Well, if you're watching me for the first time, hi, this is Arushi. I make videos related to fashion and travel. When I pick up kurtis, the one thing that I keep in mind is let the kurti be super versatile. We can wear it and style it in different ways. So I've tried styling a few kurtis in two different ways so that you understand the versatility thing in the kurti. I loved all the kurtis that I got. Let's begin. Starting off with the first kurti, I got this really pretty kurti. So if you want to go for kurti dresses, मतलब A lining जहाँ पे slit नहीं होता है, and you can wear it as a kurti or you can wear it as a dress. Blue spaghetti पहन लिया अंदर and you just wear a belt and wear pumps. It looks so chic. Office, college, तुम दोनों जगह पहन सकती हो. The best part about this kurti is it has a collar. You want to look a little put together wearing a very simple damn 350 की कुर्ती है. क्या मतलब, तो मैंने कैसे मैचिंग जूते पहन लिए. It's a simple cotton kurti. It's super comfortable and I would definitely recommend you guys to go for this one because I loved it. Fit, oh bhai, how much can I stress on that? It's just that it fits so properly कि तुम पतले लगते हो. अगर पतला दिखने वाला कुर्ती मिल गया तो भाई ले लो. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में I'll give you my size measurement, so आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हो which can be your perfect measure. थोड़ा सा get sophisticated. Now the next thing that I got is this waterfall shrug. तो श्रग का कलर और इसका कलर it matched together and together when I styled it, ऐसा एटम बॉम्ब बोलते हैं ना, एटम बॉम्ब वैसा वाला लुक है. कहाँ गया भाई, तो कहाँ है बॉर्डर. इट हैज दिस ग्रीन बॉर्डर यहाँ पे. इट हैज अ टैसल डिटेलिंग जो दिखता नहीं, वो इतना छोटा है कि गुम हो जाता है कहीं तो. बट स्टिल आई वुड रेकमेंड यू गाइज दैट दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ यू गोइंग फॉर दिस वन. तो कैसे भाऊ बहन टुगेदर लुक्स वेरी नाइस. और आई गॉट इट इन द आजरो सेल फॉर 324. आई वुडंट पे मोर देन दैट. अरे मैडम ये भी पसंद नहीं आया, ये देखो करीना कपूर स्टाइल, एकदम रेड कलर, झटैक दिखोगे, आपके अलावा कोई नहीं दिखेगा, ट्रैफिक सिग्नल भी आप ही दिखोगे. इट इज सो वर्सेटाइल. लाइक इफ यू पेयर इट विद द सेम कलर लेगिंग्स, सेम कलर दुपट्टा, यू कैन एंड सम रियली हैवी ज्वेलरी, यू कैन वेयर इट टू एनी नॉर्मल छोटू सा जो घर का ऐसा पूजा होगा तभी. हैव दैट इंडो वेस्टर्न लुक. यू कैन स्टिल पेयर इट विद सम रियली किक-एस गोल्डन चप्पल्स and just not go heavy on earrings, so just not wear earrings, you still will look super pretty. I love the color red, so I will do anything to please you to just get this one. What I liked about this is the flare that it has and its material. Oh bhai, this is in the material rayon moss, and when I talk about the material, it fits with, it goes with the flow. मतलब तुम्हारा body जैसा है वैसे ये shape लेगा. To separate the 3 layers, it has these golden मतलब lace लगा, and lace का quality is also really nice. Again, I got this for rupees 600 and I feel it's total worth the price. If you're enjoying watching the video, please subscribe. It's free. I got this in the size small. If I could fit in the size small, then you know इसका size structure थोड़ा बड़ा है. So I got this kurti set. Yellow and white doesn't look like an anda, okay? So honestly, I was not sure about this kurti when it came for the first time, but when I wore it, you can see it for yourself. It has a slit here, मतलब around your waist के यहाँ पे slit, so you can pair it along with jeans also. It can look good. So it's like a 2-piece set जो तुम अलग अलग अगर पहनो, this can be worn with jeans. This is like really good quality cotton. Honestly, 1000 के अंदर अगर तुम्हें एक पूरा सेट मिल रहा है, और क्या चीज जिंदगी में. ऐसे पाइपिन बनाया ना यहाँ पे ऑरेंज कलर का, और स्लीव्स की यहाँ पे there's some design, and it's all white
प्लेन. सो इसका जो टॉर्सो है ना, इट कम्स थोड़ा सा नीचे, नॉट टू मच हाई नॉट टू मच लो. तो उसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा यू लुक हेल्दियर देन यू नॉर्मली आर. एंड इफ यू हैव रियली हैवी चेस्ट तो थोड़ा सा इशू आ सकता है. नाउ यू कैन सी हाउ इट फिट्स ऑन मी एंड चेस्ट. So that's why I would suggest. So that's sorry. So I would just suggest you guys कि just have a look कि मेरे पे कैसे लग रहा है. And if you like it that way, place the order. मैडम जी रुकिए, आपको ये अच्छा नहीं लगा? हम आपको दिखाते हैं लहरिया, एकदम मेरा क्लासिक पीस, अभी आया है एकदम फ्रेश इन स्टॉक, ब्लू कलर का. आप इसको नहीं बोल सकते. एक मिनट मैडम, कहाँ जा रहे हो, सुन लीजिए. तो ये कैसा कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड वाइट है. यहाँ पे देख सकते हैं अलग सा पैटर्न है, पीछे भी वही सेम पैटर्न दिख रहा है. और यहाँ पे वी नेक के यहाँ पे भी कैसे डिजाइन दिया गया है, तो कैसा आप खूबसूरत लगेंगे. आप अगर ऐश्वर्या राय से कम लगी ना इसमें, तो नाम हमारा बदल लीजिए. ओके, गेटिंग बैक टू द नॉर्मल वर्जन. इट हैज अ स्लिट in the front. The sleeves are 3/4 and that's again a win-win. So if you are in a no shave November wala month, you can still wear it. You can just put on this kurti, wear some really kick-ass boho jewelry and you're good to go. I got this in the size large. I feel अगर मैं इसको size medium में लेती तो it would have been much better fitting. ये देखिए, ना ऐश्वर्या राय ना करीना कपूर, आप लगी है बिपाशा बासु. कैसा लगा आपको? इसमें पॉकेट भी दिया है. आपके पास भले ही पैसे ना हो देने के लिए, बट पॉकेट है. So the reason why I like this is because it's simple, plain. It has golden checks all over, so it doesn't disturb you anywhere. It's all over the same. Halter neck pattern, and halter neck itself says, oh, that's a sexy kurti. That's what came in my mind. Material की बात करूँ, it's in the polyester material. इसमें मुझे थोड़ी सी गर्मी होती है. It has a very huge slit at the side, and that's one very good thing. Again, I got this in the size large. बट फिटिंग मेरे को एकदम मतलब मदर सिस्टर हो गई फिटिंग की, टू बी ऑनेस्ट. इट्स लाइक यहाँ पे मुझे बहुत लूज हो रहा है, and on the hips it's like just fitting in. And when I ordered size small, it was just perfect on my chest area, but hips के अंदर नीचे ही नहीं जा रहा था. That's one struggle, man. I have to so much reduce near my hip area, and if you can relate to it, please comment down below and make me feel like I'm a normal person. You can even go to a party wearing this kurti and nobody will even know कि तुमने kurti पहनी है because of this entire structure. Now this kind of, honestly, I won't lie to you, when I wore this for the first time, I felt like I'm wearing a night gown. Nighty होता है ना घर पे पहनने वाले अपने moms का, so it gave me those vibe. I got this in the size medium. Medium still was loose, so if I would have got it in the size small, ये थोड़ा better लगता. मतलब it's obvious, right? If you are wearing a fitted thing, it won't look like a night suit. It's very long for me, but the material is super soft. So overall, if you talk about the first look that you have once you see this dress, it's not that bad, but it's not that wow मुझे चाहिए वाला feeling. होली कलर होता है ना, उसके थोड़े leaves बने हुए हैं. Sleeves भी half sleeves है, buttons है at the center. But नहीं, honestly, it's a very comfortable kurti, but you know what I mean. You need to vibe on me on that. कि मुझे ये दुपट्टा चाहिए था. यहाँ पे क्लियरली वेबसाइट पे दिया था कि दिस इज प्रिंटेड, दिस इज नॉट प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडर्ड वाला इतना सस्ता कैसे? मैंने ऑर्डर्ड एंड व्हेन इट केम आई वाज लाइक, ओह ये तो धोखा हो गया. बट नहीं, इट वाज क्लियरली गिवन ऑन द वेबसाइट कि इट्स पेंटेड. इट्स वेरी हैवी, ऑनेस्टली. इफ आई एम गोइंग फॉर हैवी दुपट्टा, आई माइट एज वेल गो फॉर एम्ब्रॉयडर्ड वन, राइट? सो द क्वालिटी इज नॉट बैड. इट्स अ वेरी लॉन्ग दुपट्टा, तो वैसे तो कोई इशू नहीं है, बट इट डजंट फुलफिल माई नीड्स. It doesn't look cheap at all. It's just that it's heavy, so mind you of that. Okay, so before ending with this video, let me tell you there's a giveaway that I'm running on my Instagram account. I'm planning for giveaways every month, so stay tuned for that. So don't forget to check out the post on Instagram. I'll link it in the description box and in the comment section where you can enter the giveaway. It's a complete effort-based giveaway. I hate picking it up from like a normal site. हाँ ये जीत गया यार तुम. You guys put a lot of efforts, and these giveaways are just a small token of love to appreciate all the love and to support me in the thing that I love doing. So thank you so much for watching the video. Don't forget, I've come up with new videos every Friday and once in a while on Sundays. Till next time, don't forget to shop till you drop.
I'm not saying that. Shop when you need, shop when you feel like. Keep smiling, and I'll see you guys next time. Bye.